Assalamualaikum and a very warm welcome ladies and gentlemen. आप देख रहे हैं रैंटोक्रैट एंड आई एम योर होस्ट सुंदस मलिक। रैंटिंग मतलब जज्बाती गुफ्तगू, कोई माने या ना माने बट अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पाकिस्तानी अवाम का भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पास टाइम है ये। पार्लियामेंट कैफेटेरिया से लेकर नुक्कड़ के टी स्टॉल तक, पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट और वुकला से लेकर ट्विटर वॉरियर्स तक हमारी आवाम ना सिर्फ हर चीज़ के बारे में बहुत पैशनेटली फील करती है बल्कि उन फीलिंग्स को बहुत पैशनेटली एक्सप्रेस करने में भी बिलीव करती है। सो पार्डन माई हिंदी बट हमने सोचा कि क्यों ना हम भी बहती गंगा में हाथ धो डालें। 4 पैसे लगा ही बैठे थे, हमने सोचा चलो करते हैं हम भी रैंटिंग शुरू। So let us begin our show with our first segment, News of the Worlds. As we know that despite our many claims as Pakistanis of being the best, unfortunately all that's brilliant about this country is mostly covered under the shadow of economic and socio-political failings. And like many other developing nations, हमारा शुमार भी third world countries में होता है। But sometimes there is something, one little teeny tiny thing which gives all of us on the other side of the pasture some hope. That thing can be a small feeling or a kind gesture which lets us know that no matter how great the difference in our economic or military strength may be, the West isn't always the best. और पिछले 4 सालों से पाकिस्तान समेत तमाम दुनिया के लिए no pun intended that teeny tiny thing was Donald J. Trump, an enigma wrapped inside a riddle held tight with some hairspray. A man who, when compared to someone like Mr. Fayazul Hassan Chauhan or the verbal shredding machine Mr. Mushahidullah for political incorrectness, makes the latter two look like nursery school kids. But there is a lot that Mr. Donald J. Trump seems to have learned from us too, specifically from PDM. Just like our politicians at home, Donald Trump refuses to accept the election results. And just like our warriors of democracy, he has decided to run headfirst into the brick wall of democracy until it breaks. All because he fails to understand कि मुझे क्यों निकाला। Rather than keeping up with tradition, Donald Trump has chosen not to give out a concession speech and filed a total of 16 lawsuits against the Democratic Party for voter fraud. On behalf of all of the world watching, I'd just like to say, keep it up, Don. It's hella fun watching you lose your brain. Now let's move on from elections stateside to elections GB side in our next segment, Politically Incorrect. जैसा कि हम सब जानते हैं, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस आर अंडरवे एज वी स्पीक। मौसम के ठंडा होने के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान की 7,45,000 अवाम गर्मजोशी के साथ अपने खित्ते में होने वाले इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। टीआई, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स 23 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपने उम्मीदवारों को भरपूर सपोर्ट करते हुए पिछले काफ़ी हफ्तों से नजर आ रहे थे। जहां प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने दौरे के दौरान गिलगित बल्तिस्तान की अवाम की ख्वाहिशों को पूरा करने और जीबी को प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस देने का वादा किया, वहीं बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान की अवाम के साथ नए वादे और पुरानी शिकायतें दूर करते हुए नजर आए। वी डोंट नो कि इलेक्शंस का रिजल्ट क्या होगा और उससे भी इम्पोर्टेंट कि इलेक्शन रिजल्ट के बाद क्या होगा। हारने वाले क्या फिर धांधली का नारा बुलंद करेंगे या गिलगित बल्तिस्तान एंड बाय दैट प्रॉक्सी पाकिस्तान की सालमियत को अपनी हुकूमत के ऊपर रखते हुए अवाम के बारे में भी कुछ सोचेंगे। एंड नाउ वी मूव ऑन टू आवर फाइनल सेगमेंट, हार्ट टॉक। The word victim is thrown around in Pakistan's political arena. The word third party interference is not far behind. और आजकल की सियासत मजलूमों से भरपूर है। वो जो बिलीव करते हैं कि अपनी बात ना बोल पाना, अपने बुनियादी हकूक़ का इस्तेमाल ना कर पाना और यहाँ तक कि एक कन्विक्टेड क्रिमिनल को मुल्क से बाहर जाकर इलाज ना करवाने देने की इजाज़त सरासर जुल्म है। लेकिन एक कौम ऐसी भी है जिनको आप ये सब बताएंगे तो शायद वो इस बात पर हंसना शुरू हो जाएंगे, और वो इसलिए नहीं कि उस कौम के लोग पागल हैं या उनको जुल्म नज़र नहीं आता, बल्कि इसलिए कि उस कौम के लोग पिछले 73 सालों से इन्हीं मुजालिम की असली शक्ल देख रहे हैं। Ladies and gentlemen, this week the Indian forces targeted civilians in the Neelam Valley of AJK. According to several independent news agencies, Indian Army in a cowardly attack on the LOC martyred 6 people including soldiers. The chairman of the Committee on Kashmir Affairs, Mr. Shahryar Afridi, called this violation a war crime.
ISPR also condemned the attack and reported a response which left more than 10 soldiers dead. But I personally have nothing to say. As a Kashmiri myself, I thank Pak Army with all my heart for laying down their lives for the protection of my brothers and sisters. And I also thank Mr. Shahryar Afridi for condemning these actions. But that hasn't stopped what's going on in Kashmir. I'm sure that Pakistan Army has the situation on the LOC under control. But my brothers and sisters are still being shot like wild animals in Jammu and Kashmir while I'm talking to you. In the name of security measures, my sisters are being illegally detained and raped while I'm talking to you. Many children of my valley will not know if their father will ever come back or will he become the resident of an unmarked grave while I'm talking to you. And this cycle continues as we speak. So pardon me if I don't feel more sympathy towards the plight of a few when my ears keep getting diverted to the noise of shells blowing up my land and my eyes keep getting distracted with the blood gushing out of my brethren like the Neelam River. Ladies and gentlemen, that's our show. Please pray for Kashmir. Stay classy and keep ranting. This is Sundar Malik signing off. Please like, share and subscribe to the video and keep a lookout for our next episode.